this is a demo session, and here we are going to discuss about what we have in our course. Okay, what we have in our detailed course. Okay, so all right, let me just give you an overview about the course, and then we'll proceed and we'll discuss about the weightage part basically today. Okay, and what else? Okay, how many of you have worked on Primavera before? Anyone? Nope, sir, not before. I have worked on MSP. You have worked on MSP. All right. Actually, I studied 6 years before, then I don't have a touch. Okay, 6 years before. All right. No issue. All right, so this is something Primavera, it looks like this, right? And people who have worked on MSP, they will already have, information or knowledge about the terminologies which we use in day to day, right? But today, I won't be able to walk you through the complete process, how the schedule building takes place inside the Primavera, all right? But we'll just discuss on the parts what we have in the course, right? Detail in the course, which we'll be covering on, okay? So these are, the basic points. You can say the nutshell overall outcome of the course. We'll go with the complete construction process, how the different stages are there in construction process, in construction project. We'll discuss about that. Before moving into any of the learnings deep inside the construction industry, you must should be aware of how the project works, right? And what are the different stages. Then we will come towards, what are the specific roles and responsibility of a planning engineer. Then we'll discuss about the project scope as well, how the detailed scope is being structured, and how or over of that you can define the work breakdown structure, which is very important in any of the scheduling part. And who are the participants involved in the project? We'll cover the delay analysis, right? How to catch the delay and how to make the catch-up plans and all other stuff. Then we are going to complete the complete Primavera software from starting to the end, from basic to the advanced level. Earned value management, of course, very important. Then project cost management, we'll learn how to make the cash flow out of the data from Primavera, how to import and export it to the Word and to the Excel, and how you can use that data to create the workflow and other stuff. Resource management, okay, how the resources are being managed in the project. And apart from all these things, we'll be covering the features in Excel, because when I say planning and any of the office job, there's nothing without the Excel, right? Most of the time, as a planning engineer, what you will be doing, you'll be taking out the data from Primavera and you'll be using it into Excel to create the major of your reports, S-curve and all other stuff, to monitor the physical progress and all. So what we have included in this course apart from this is, like, you learn how to take the data from there and how to design these kind of stuff. What is this? This is monthly update, right? What we need to do in this one, you just have to come and this is based on the scope. You just need to come, let's suppose on this particular month, out of this total scope, you have completed several, right? So you just have to update here. The overall progress for these parts will automatically get update, right? These things. What I have done here, I have just broken down this complete project into 3 packages. Package 1, 2, 3, based on the cost only right now. Then here you'll get the individual progress for all based on these scope, whatever will be completed. And in a similar way, getting out of all these 3 packages, you'll get the overall progress of this, okay, for this project. If you can see here, okay, we have chart as well, which will show you the overall progress. And from here, you can see, okay, which has been completed and what is remaining. So this is something has been created based on the scope. Whatever the things you'll be updating here, it will automatically fetch out the overall progress. So this is how you'll learn how to create all these things into MS Excel,
Now, what you can do other from here, you can just switch using these navigation buttons, and this is something cash flow. You can use this as well. Okay. Apart from that, let us go back to the timeline. You can create these kind of timelines in Excel as well. All right. Then let us go back to the dashboard. And this is something the dashboard. This is dynamic dashboard. You'll just switch here using these buttons, and you'll see the details or the updates according to the project, right? These are the things which has been included. Okay. So this is something add on apart from Primavera. We'll be learning through the complete Primavera as well, from basic to the advanced level, covering all earned value concept, resource management, cost management, delay analysis, and other stuff. And this also, because I think, like, is Primavera is important to learn, but apart from that, Excel is also very important for the reporting and other purpose as well. Okay. And apart from this, the major thing which we use as a planning engineer is S-curve, okay, to monitor the progress of the project. So this is something, this is how you will be using the complete data of Primavera, right? It looks like a very huge data and very, hard work done in this particular sheet, but this is just one simple formula, right? And with the help of this one simple formula, you'll be able to complete this kind of S-curve, which will give you planned, which will give you actual, and which will also give you the expected cumulative progress of the project, right? So you can very easily analysis with the help of this S-curve, where you whatever the things you have planned on the monthly basis, and how actually your project is going on, and looking into the current health or the current situation of the project, what is being expected, in future. So this is how the S-curve is being made. It is simply used to track plan versus actual. We will be learning how to make these kind of stuff in Excel as well. Okay. Now let us go back and see the detailed framework of this. Right, this is about the Primavera P6, why it is being used. And now these will be the highlights of the training program: project life cycle and basic of project management, master on how to schedule your project. You'll be learning everything in Primavera from basic to the advanced, deep down advanced Primavera features and value management, resource and cost management, project monitoring and delay analysis, PMS system, and dynamic dashboards in Excel. Okay. These will be your training outcome. You'll be able to schedule a project. You'll be capable of using the software to the advanced level. You'll be able to manage the cost and resources in the project using the software. Will be able to track the project, analyze the delay. Will be able to do advanced reporting and creating dynamic dashboards for monitoring purpose, right? Because just to create a project is not sufficient. All right. You need to figure out how you are going to manage that. And monitoring is very important, not only the planning. Okay. Because if you are not doing the monitoring, in a good way, you cannot catch up the delays and all other steps which are harming for your project, right? Which may harm your project as well. So not only the planning, but monitoring, and how to monitor, what thing to monitor in a project is very important, right? And this is the detailed syllabus of the project: basic and introduction of project planning and management. Okay, getting started with the Primavera, learning all the simple concepts from what is CPM, what is PERT. We'll be solving the theoretical examples as well, theoretical case studies, and then slowly we'll move towards the software part. Because learning software, before that, it is very important to know how software is working, right? So what things are going behind the software? What are the calculations on which software is running? That is quite important to learn. We'll be learning all the terminologies related to planning stuff, critical path, and all other things as well. Okay. Then creating a project scope, plan, and activity schedule, project scheduling management using Primavera. Okay, understanding progress calculation. What are the logics being used in the Primavera, right? If I ask, yeah. Sorry to interrupt. You can use a couple of bits of. I've texted. You can please check out the text also. Sorry. Okay, chat. Yes, yes. Okay. Okay, I asked earlier, but people said that, okay, continue in English. Okay. Okay.
increase the volume, please speak in Hindi. Okay. Fine, guys. I guess like people are comfortable with Hindi as well, who were asking for the English. Mix both the languages. So like last session we had with MSP, sir was explaining in English also and Hindi also simultaneously. So both of them were comfortable. So we had that entire pool sticking till the end also. चलो ठीक है. ऑलराइट गाइस, तो देखो एक बारी से वापस से देखते हैं मेन पर्पस क्या था. अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि हम इस कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या चीजें सीखेंगे, राइट. तो सॉफ्टवेयर तो देखो एक पार्ट है ही है, राइट. विल बी लर्निंग द कंप्लीट सॉफ्टवेयर फ्रॉम बेसिक टू द एडवांस. अभी 1 घंटे में सारी चीजें कवर नहीं हो सकती है ना. तो जितने भी एडवांस फीचर्स हैं प्राइमरा के स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, कैसे चलाना है, कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे WBS बनाना है, हाउ टू मैनेज एवरीथिंग, how to manage cost, resources, and how to analyze the delay, everything you'll be learning on. But addition to that, what is important is like how that data will be used, कैसे वो data use होगा. तो सिर्फ प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर सीखने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी जानना जरूरी है, राइट, कि आप कैसे इन सारे डेटा को यूज करते हो, है ना. तो ये यूज रिपोर्ट्स आपको बनानी पड़ेंगी वर्किंग एज अ प्लानिंग इंजीनियर. आपसे कोई बोलेगा कि आप अपने प्रोजेक्ट की फिजिकल प्रोग्रेस किस तरीके से मॉनिटर करोगे, तो इस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा, राइट. हमको ये आउटकम चाहिए कि किस मंथ में आपका प्रोजेक्ट कितना प्लान्ड था कंप्लीट होने के लिए, और अभी एक्चुअल में आपने कितना एक्चुअल में कितना आपने अचीव किया है. जैसे यहाँ पर आप देखोगे, है ना. तो अगर मैं बात करता हूँ इस करंट मंथ की, राइट, यहाँ तक सितंबर 20 तक, तो सितंबर 20 तक मेरा प्लान था कि मैं 100% कंप्लीट कर लूंगा प्रोजेक्ट, राइट. अगर मुझे पढ़ना सीखना है कि कैसे इस कर्व को पढ़ना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो हियर, आई विल ड्रॉप अ लाइन, राइट. मैं इस तरीके से एक सितंबर में अगर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ओके, मैंने एक सिंपल सी लाइन इस तरीके से ड्रॉ की, और इसको रिवर्स करते हैं लाइक दिस, राइट, एंड लेट अस स्ट्रेच इट यहाँ पे और इस तरीके से. तो अगर मैं देखूं तो सितंबर मंथ में मेरा प्लान प्रोग्रेस था 100%, मैं 100% प्रोजेक्ट को कवर कर लूंगा. बट एक्चुअल में हुआ क्या, एक्चुअल में मैं सिर्फ 80% के अबाउट इस प्रोजेक्ट को अचीव कर पाया हूँ, 80 to 82% समथिंग राइट. ओके, तो ये सारा चीजें मैं कहाँ से जान पा रहा हूँ, मैं सारी चीजें प्राइमरा में भी बना सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे थोड़े और एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होंगे, राइट. बट मैं एक्सेल में उस डेटा को एक्सपोर्ट करके यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज लगा के ये सारी चीजें कर सकता हूँ. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आती है वेटेजेस का, और हमें पता ही नहीं होता है. हम सॉफ्टवेयर तो सीख लेते हैं, बट ये वेटेजेस क्या होता है ये हमें समझ ही नहीं आता, राइट. किस तरीके से देना है, ये वेटेजेस टर्म क्या है, वी डोंट नो दैट. ओके, सो विल बी लर्निंग ऑल दीज थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, किस तरीके से मॉनिटरिंग पर्पज के लिए ऐसे डैशबोर्ड्स बनाने हैं आपको, ये जो जितना भी डेटा होगा जो भी आप यूज कर रहे होगे, तो उससे ये सारे इंटरेक्टिंग डैशबोर्ड किस तरीके से बनाने हैं, हाउ दिस डेटा इज गोइंग टू बी यूज्ड, राइट. किस तरीके से डायनेमिक डैशबोर्ड्स आप बना सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है. सो दिस इज समथिंग विच इज इंक्लूडेड इन दिस कोर्स एज वेल. उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या डिटेल सिलेबस है, राइट. आई विल नॉट गो इन वेरी डिटेल, ओके. ये सारा कुछ ट्रेनिंग का सिलेबस है, सारी चीजें आप सीखोगे प्राइमरा में. इसमें डिटेल में सारा कुछ दिया हुआ है कि प्राइमरा में कौन कौन सी चीजें हैं, राइट, जो हम सीखने वाले हैं, एवरीथिंग. लाइक अगर आप बोलते हो कि फिजिकल परसेंटेज टाइप क्यों यूज करते हैं, राइट, यूनिट परसेंटेज टाइप क्यों यूज करते हैं, राइट, तो उसके पीछे का रीजन है गाइस, राइट. सो वो सारी चीजें हमें जानना जरूरी है. लर्निंग अ सॉफ्टवेयर इज वेरी इजी, यू कैन लर्न एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर इन 20 to 25 days. बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज हाउ सॉफ्टवेयर इज बीइंग रनिंग बिहाइंड, किस तरीके से वो सॉफ्टवेयर चल रहा है, कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं पीछे, उसका पीछे का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है. तो हमारा जो भी ओवरऑल ट्रेनिंग होगा वो इसी तरीके से कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ेगा. इज इट क्लियर गाइस? नाउ लेट मी जस्ट मूव टुवर्ड्स द टॉपिक विच वी वर अबाउट टू कवर टुडे. अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे फिजिकल प्रोग्रेस चाहिए अपने प्रोजेक्ट, राइट, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, हाउ यू विल बी एबल टू गिव मी द फिजिकल प्रोग्रेस, एनीवन? ये शेड्यूलिंग वगैरह जो भी हम कर रहे हैं, है ना, हमने ये सॉफ्टवेयर देखा अभी इस तरीके से. ये सॉफ्टवेयर में बनाना है, बहुत सिंपल है, राइट. ये देखो यहाँ पर अगर मैं गैंट चार्ट को देखता हूँ, if I'll see this Gantt chart, these yellow lines are what, these yellow bars are what, these are showing me the baseline, right, राइट, कि ये मेरा बेसलाइन था, ये मेरा प्लान था. बट एक्चुअल में हुआ क्या, ओके, एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में मैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कब करना चाह रहा था, मैं यहाँ से जुलाई से समथिंग स्टार्ट करने वाला था और अगस्त के एंड तक मैं इसको खत्म करने वाला था.
बट अगर मैं अभी की सिचुएशन देखता हूँ तो ये कहाँ पर पहुंच चुकी है, मिड ऑफ अक्टूबर, और अब मैं इसे कब खत्म कर रहा हूँ, नवंबर के बाद, इन दिसंबर समवेयर, राइट। और कैसे ये चीज यहाँ पर आप रीड आउट करके भी देख सकते हो, है ना। यहाँ पर आप न्यू कॉलम्स ऐड कर सकते हो, आप देखोगे तो स्टार्ट डेट है, फिनिश डेट है, एक्चुअल स्टार्ट डेट है। दैट मीन्स दिस एक्टिविटी हैज बीन स्टार्टेड, राइट, बट कभी फिनिश होगी पता नहीं, राइट, अभी तो पता नहीं है मेरे को। और यहाँ पर मैं अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश डेट, सारी चीजें देख सकता हूँ, राइट। वेरिएशन कितना है मेरा, -71, राइट। 71 दिन का, 71 डेज का वेरिएशन है, जब मैं स्टार्ट करने वाला था और जब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ एक्चुअल में, राइट। तो अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट का वेरिएशन देखोगे तो 71 डेज है। दिस इज समथिंग विच इज शोइंग हियर, वेरिएशन प्लान से और एक्चुअल का। तो ये सारी चीजें मॉनिटरिंग के लिए होती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू क्रिएट लॉट ऑफ डिफरेंट रिपोर्ट्स एज वेल। तो प्राइमेरा में किस तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, कैलेंडर असाइन करना है, रिसोर्सेज असाइन करना है, कैसे उनकी मॉनिटरिंग करनी है, कैसे उन्हें मैनेज करना है, ये पूरा पूरा सिलेबस में है ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट दीज डिटेल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ओके, सो नाउ बैक टू आवर क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि देयर इज वन माय प्रोजेक्ट, आई हैव 100 एक्टिविटीज ऑन दैट, हाउ आई विल से that I have completed 40% of my project, 50% of my project, on what basis you'll decide that this particular weightage goes to one particular activity? किस तरीके से आप उसे define करोगे? Anyone on the call? We have around 48 people. So anyone on the call? Hello. We can make it in lumps, approximate percentage. Out of, for example, 10 flats, we are finishing 5 flats, means we are taking 50%. You mean to say you have 5 flats, you have completed one, you'll say 20% you have completed, right? Yeah. But tell me the thing, like in schedule, जब मैं planning करता हूँ, जब मैं scheduling करता हूँ किसी project की, तो I write down these activities, right? ये detail activities मेरी जाएंगी। अभी मैं सिर्फ एक फ्लैट की बात करता हूँ, ठीक है। एक फ्लैट में आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपकी ये 4 एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई हैं, so you have completed how much percentage of project? That is why what the question is. If you We can hello. Yes. Yeah, Gaurav here. We can measure through planned man hours versus actual man hours. Okay, great. Right. So ideally, considering thumb rule, we knew what are the total man hours required to complete that activity, and what we have assigned for that particular activity throughout the duration. So we can measure through that. हाँ, आप प्रोग्रेस मेजर करने की बात कर रहे हो, बट एक चीज आपका सही है, आपने बोला कि आप सीधा ये बोलना चाहते हो कि यू कैन गिव वेटेजेस टू द एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द मैन आवर्स, राइट? Right. दिस इज समथिंग व्हाट यू वांट टू से। और यहाँ पर किसी ने चैट पे बोला है कि परफॉर्मेंस परसेंटेज। तो परफॉर्मेंस परसेंटेज मींस व्हाट? प्लानिंग, हु इज जस्ट Excuse me, do you mind if I answer? यस, या श्योर। Yeah, I think that depends on whether you choose the basis, whether duration or physical completion. So the percentage is based on whether physical completion percentage or duration percentage. Okay, but okay, let me just clear it out. Anyone else who want to add something? सर यूनिट शेम करने से हो सकता है, अगर हम अमाउंट में सारे एक्टिविटी को अमाउंट में ले आते हैं, अगर एक्चुअल अमाउंट हमें पता चल जाए तो उससे फिजिकल परसेंटेज निकल सकता है। ओके फाइन। देखो, आप में से बहुत लोगों ने बोला, एक ने बोला एफर्ट के बेसिस पे, सॉरी एक ने बोला मैन आवर्स के बेसिस पे वी कैन जस्ट डिवाइड द परसेंटेज फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटीज। यू सेड दैट यू विल डिवाइड बेस्ड ऑन द अमाउंट, दैट्स ओके फाइन। अभी जो और भी फिजिकल परसेंटेज वगैरह बोल रहे थे, ही वाज टेलिंग समथिंग एल्स, लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट। ओके, अब बात करते हैं इसकी, ठीक है, विल वर्क ऑन दैट। अभी देखो होता क्या है कि सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ वेटेजेस की बात करता हूँ, if you'll see here in these two scenarios, what is happening, there's a design work, procurement work, construction work, just for the understanding purpose, right? And what we have done
Okay, what we have done is we have given the similar weightages to each and every activity, 33.33%, 33.33%, and all. So this is a wrong behavior, right? This is not how you have to, give weightages to your activities. Please just mute yourself. जिसका भी mic on है. Okay. अब दूसरे केस में अगर आप देखते हो, राइट, यहाँ पर जो वेटेजेस प्रोवाइड किया गया है, दैट इज 5%, 7% एंड 88% रिस्पेक्टिवली, राइट. सो दिस इज समथिंग, दिस कुड बी अ करेक्ट बिहेवियर, राइट. तो ये चीज अचीव कहाँ से हो रही है, 5%, 7% एंड 88%, राइट. तो दिस इज हाउ योर मॉनिटरिंग शुड बी, राइट. आपको वेटेजेस देना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी जो फिजिकल प्रोग्रेस का परसेंटेज निकल के आएगा, दैट विल बी करेक्ट. ऑलराइट. नाउ अभी इसका मतलब सिंपल ये नहीं है, यहाँ पर दो चीजें. देखो, अभी किसी ने यूनिट का नाम लिया था कि अगर आप यूनिट सबकी एक बना दो तो कॉस्ट में ऑब्वियसली यू कैन मेक दैट. अदरवाइज अगर आप यहाँ पर बात करते हो कि टोटल स्कोप, एक एक्टिविटी, एक टास्क है, उसका टोटल स्कोप है 100 क्यूबिक मीटर, राइट. और यहाँ पर आप देखोगे तो दो एक्टिविटीज आपकी, ये सॉरी, आपका 100 क्यूबिक मीटर स्कोप है, बजट दिस मच, ड्यूरेशन इज दिस, एफर्ट इज 18 मैन डेज, machine and equipment cost is this much, right? We cannot give weightages to the activities based on their scope, as the unit of scope will be different for different activities. What I try to say is, किसी particular activities को आप cubic meter में नाप रहे हो, किसी activity को आप किसी और unit में नाप रहे हो, right? तो जो units हैं, जो scope की units हैं, they are not similar, right? So you cannot give weightages based on the स्कोप. जो भी आपका स्कोप है, जो भी आपकी यूनिट्स हैं, दे आर डिफरेंट. किसी को आप क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट कर रहे हो, किसी को आप स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट कर रहे हो, किसी को रनिंग मीटर में, एंड सो ऑन, राइट, इन नंबर्स एज वेल. तो दैट इज समथिंग व्हिच हैज बीन एलिमिनेटेड. सीधा सीधा वो चीज तो हम कर नहीं सकते हैं. उसके बाद क्या आता है हमारे पास कि हम कॉस्ट के बेसिस पे करते हैं. अभी बहुत सारे लोगों ने कॉस्ट बोला, एंड दैट इज क्वाइट करेक्ट एज वेल. जो हम डे टू डे में करते हैं वो कॉस्ट के बेसिस में करते हैं, राइट. बट अब मेरे को एक चीज आंसर दो, इज इट इम्पोर्टेंट एवरी टाइम, लाइक बेस्ड ऑन कॉस्ट ओनली यू शुड गिव द वेटेजेस? सिर्फ एक कंपोनेंट आपको लेना चाहिए जब भी आप वेटेजेस वगैरह डिसाइड कर रहे हो? बिकॉज अगर आप कॉस्ट के ड्यूरेशन पे या ड्यूरेशन पे एक्टिविटी की, या कॉस्ट के बेसिस पे, दो ही चीजें बचती है हमारे पास जहां पर हमारी यूनिट क्या होती है, सेम हो रही होती है. या तो हम एक्टिविटीज की कॉस्ट के ऊपर दे देते हैं, और या तो हम क्या कर देते हैं, ड्यूरेशन के बेसिस पे दे रहे हैं, राइट. हम दो चीजों के ऊपर दे देते हैं, मोस्टली हम कॉस्ट के ऊपर दे देते हैं. ओके. बट कई लोग होते हैं जो ड्यूरेशन के बेसिस पे भी देते हैं. तो गिव मी एन यस और नो, ठीक है. अगर आप कास्टिंग ऑफ स्लैब की बात करते हो कहीं पे भी, तो उसमें लेस ड्यूरेशन लगेगा एज कंपेयर टू डूइंग अ प्लास्टर. बट अगर आप बात करो कि इंपॉर्टेंट कौन सी एक्टिविटी है आपके लिए, क्रिटिकल कौन सी एक्टिविटी है, दैट इज ऑब्वियसली कास्टिंग ऑफ स्लैब, राइट. सो गिविंग वेटेजेस to activity based on only the duration will not be sufficient. In a similar way, giving weightages only on the cost will not be sufficient. ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी काम को करने में ज्यादा पैसा लग रहा हो और किसी काम को करने में कम पैसा लग रहा हो, और कम पैसे वाली कम पैसे वाली जो एक्टिविटी है वो आपकी वो इतनी क्रिटिकल ना हो, राइट. एवरी टाइम इट डजंट हैपन, राइट. व्हाट आई मीन टू से इज ओनली गिविंग two factors, okay, two different factors every time to calculate the physical progress won't give you the actual physical progress, right. हो सकता है वहां पे वेरिएशन हो. अगर आप सिर्फ एक सिंगल कंपोनेंट को पकड़ करके चलोगे तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको फिजिकल प्रोग्रेस में देखने को मिल सकता है. तो व्हाट इज द राइट वे, राइट, व्हाट इज द राइट वे? अभी आप चाहो तो यहाँ पर एफर्ट के भी बेसिस पे दे सकते हो, जैसे अभी हमने मैन आवर्स या मैन डे के बेसिस पे देखा, राइट. तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, राइट, कि हम ये पांचों कंपोनेंट यूज करेंगे, ओके, टू कंप्लीट द फिजिकल प्रोग्रेस, टू ट्रैक द फिजिकल प्रोग्रेस. विल आल्सो असाइन द वेटेजेस बेस्ड ऑन कॉस्ट, ड्यूरेशन, efforts, criticality, and risk involved, right. These are the 5 major components, right, which will be used basically to give the weightages. okay, समझ में आ रही है बात? ये सारे पांचों कंपोनेंट जरूरी हैं, सिर्फ एक के बेसिस में आप वेटेजेस डिसाइड नहीं कर सकते हो, राइट. मोस्ट ऑफ द टाइम हम वही करते हैं, बट व्हाई नॉट जस्ट इंप्रूव समथिंग? हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि यार ये सारी चीजें भी इंक्लूड की जा सकती हैं, as a parameter. Agreed or not? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now,
important thing comes up, how this thing will be implemented, किस तरीके से ये सारी चीजें implement होंगी, right? इसका implementation important है हमारे लिए, right? Okay? और दूसरा ये कि जो हम वेटेजेस देते हैं, हाउ वी गिव द वेटेजेस, किस तरीके से हमें वेटेजेस देना है ताकि जो हमारा फिजिकल प्रोग्रेस होगा। जैसे आप यहाँ पर देखते हो, राइट, यहाँ पर हर एक एक्टिविटी को क्या दिया हुआ है, वेटेजेस दिया हुआ है, टोटल वेटेजेस, दिस इज द टोटल वेटेज, राइट। अगर आप इसे सम अप करोगे तो इट इज कमिंग टू 100। नाउ ईच एंड एवरी एक्टिविटी जैसे जैसे कंप्लीट होती जाएगी, मेरे फिजिकल प्रोग्रेस की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पर मंथ बाई मंथ आप प्रोजेक्ट को देखोगे तो दिस इज द फिजिकल प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट। और इसी तरीके से यहाँ पर एक्चुअल प्रोग्रेस होगी, जो भी ये ड्यूरेशन के बेसिस पे, जिस भी दिन वो एक्टिविटीज जैसे भी कंप्लीट हो रही हैं, माय कर्व इज गेटिंग अपडेटेड, राइट। But the question is how you will assign the weightages. What is the one trick which will give you the actual, physical progress to chance to complete the actual physical progress, right? किस तरीके से उनको असाइन करना है। ओके, सो दिस इज वन सिंपल ट्रिक, राइट, कि कैसे आपको वेटेजेस को असाइन करना है। अगर आप यहाँ पर देखते हो, है ना, तो इसी तरीके से WBS, हाउ मेनी ऑफ यू नोज व्हाट इज WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर? No, sir, we don't know. Okay. Anyone else who have worked on MSc? It is a graphical representation. Why graphical representation? Hello. Yes. Yeah, Gaurav here. Yes, Gaurav. Yeah, WBS is actually the total steps involved in a project to complete particular milestones or to complete the whole project. The steps involved in the project. Okay. Okay. ठीक है, Gaurav. Now let me just add few things more on that. Okay. We'll not say steps to complete the project. WBS is simply what? The breakdown structure of the project, right? जो भी आपके प्रोजेक्ट का टोटल स्कोप है, उसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, राइट। आपका टोटल स्कोप था, उसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। यहाँ पर देखो, ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये सारी क्या है, अंदर एक्टिविटीज, एंड दीज कलरफुल चीजें, ये जो आपको दिख रहा है, स्ट्रिप्स दिख रही है, दीज आर व्हाट, योर WBS, राइट। ये चीजें आप यहाँ पर WBS टैब में जाओगे, you'll see this is the project name. Now these are the WBS: design, engineering, foundation, structure, machine, mechanical, electrical system के अंदर अगर आप देखोगे तो elevators, HVAC, plumbing, electrical, exterior finishes, brick, roof, doors and window. These are components of your project. Now ये जैसे जैसे ये component complete होते जाएंगे, आपका project complete होते जाएगा। Now what is important in WBS? कि WBS को बनाना किस तरीके से, राइट, कैसे फ्रेम करना है WBS को। दिस इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, कि अगर आपको प्रोजेक्ट का टोटल स्कोप पता है, हाउ यू विल ब्रेक इट टू डिफरेंट WBS लेवल, ठीक है। तो डिफरेंट WBS लेवल में कैसे ब्रेक करना है, दिस इज ऑल्सो चैलेंज, राइट। नाउ व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ WBS इज, कैसे आपको ब्रेक करना है इस तरीके से। अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, लेट्स सपोज, एंड दीज आर द सेवरल लेवल्स ऑफ WBS लेवल 1 2 3 4 5 6 7, राइट। Now your WBS should be break down into such a way कि अगर मैं आपसे एज अ प्लान प्रोजेक्ट मैनेजर पूछता हूँ कि यार मेरे को ये बताओ कि पर्टिकुलर लॉट 1 में, ठीक है, लॉट 1 में प्रोक्योरमेंट की क्या प्रोग्रेस है, राइट। तो कब आप बता पाओगे, जब आपने प्रोक्योरमेंट को एज अ WBS बनाया हुआ है, राइट। नहीं बनाया हुआ है तो आप नहीं बोल पाओगे, करेक्ट। इसी तरीके से यहाँ पर मान के चलो 3 अलग अलग डिपार्टमेंट से, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम, राइट, दिस बिलोंग्स टू अ रेलवे प्रोजेक्ट। तो अगर आप यहाँ पर बात करोगे, ठीक है, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आपका ब्रेकडाउन जो होगा वो इस तरीके से इतना शानदार होना चाहिए कि आपसे कोई सी भी किसी भी इंस्टेंट की प्रोग्रेस पूछे तो तभी आप दे पाओगे जब आपने उस कंपोनेंट को वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में शामिल किया होगा। अब मैं यहाँ पर लोकेशन वाइज ही ब्रेक करूंगा, तो मैं लोकेशन वाइज भी फिजिकल प्रोग्रेस बता सकता हूँ, किसी को प्रोग्रेस बता सकता हूँ, कितना काम हो गया, कितना बचा है, कौन सी एक्टिविटी प्रोग्रेस में है, कौन सी स्टार्ट नहीं हुई है, क्या है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में, एक प्रोजेक्ट के अंदर मेरे 4 कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे से कोई सा भी प्रोजेक्ट मैनेजर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का अपडेट मांग सकता है ना। तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, है ना। इसी तरीके से कौन कौन सी मेजर एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, उन पे भी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा।
So this is the beauty of breakdown structure कि जब आप WBS बना रहे होते हो तब आपको ये भी ध्यान देना पड़ता है कि WBS बनाना कैसे है, राइट? हाउ टू क्रिएट अ WBS, ताकि जब आप मॉनिटरिंग के लिए पहुंचो तो मॉनिटरिंग अच्छी तरीके से कर पाओ। क्लियर है? नाउ बात कर रहे थे हम कि वेटेजेस को किस तरीके से असाइन करना है, राइट? So this is how the weightages are being assigned. Your must goal is what? आपका जो एक गोल होगा वो क्या होगा कि हर एक WBS लेवल पे आपका जो टोटल ओवरऑल सम होगा दैट विल बी 100, ओके, फॉर द ओवरऑल वेटेजेस दैट विल बी व्हाट 100। यहाँ पर आप देखते हो तो ये WBS था, इसके अंदर सब WBS थे, 1 के अंदर 1.2, 1.1, 1.2, 1.3, and apart from these under 1.1 you have these activities 1.1.1, 2, 3 like that, right? So this is WBS level 1, this is WBS level 2, and this is what level 3 where we have all our activities, okay? Now this is how you have to give the weightages. सबसे पहला WBS का लेवल क्या, मेरा वेटेजेस कितना है इसमें 100। अब इस लेवल के अंदर मैं देखता हूँ तो मेरे 3 सब लेवल हैं, राइट? 1.1, 1.2 एंड 1.3। तो इसका देखूंगा तो 8% है, इसका देखूंगा तो 12% है, और इसका देखूंगा तो 80%। नाउ व्हाट इज द टोटल? 80 प्लस 12 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 100, राइट? तो मैंने वही बोला कि सम ऑफ वेटेजेस फॉर ईच WBS शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू 100, ओके? नाउ इसके अंदर जाता हूं तो मेरे पास 3 एक्टिविटीज हैं, 1.1.1, 2 एंड 3। तो ओवरऑल वेटेजेस कितना है? 50 प्लस 30 प्लस 20। नाउ व्हाट इज द टोटल? टोटल अगेन कम्स टू 100, राइट? गेटिंग एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay, so this is the way how you have to define the weightages. Until unless you will not define the weightages in this particular order, you will not be able to measure your progress in actual. Clear? In a similar way, यहाँ पर अगर आपको इस तरीके से समझ में आता है, you can just see in this way. प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट की पूरी ओवरऑल प्रोग्रेस कितनी? 100% वेटेजेस है ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट को। एक प्रोजेक्ट को हमने ब्रेक किया 3 कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट 1, 2, 3। तो ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट विल हैव देयर ओन वेटेजेस, राइट? अभी ये कॉन्ट्रैक्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा प्रोजेक्ट कितना परसेंट कंप्लीट हो जाएगा? 3.57%। इज इट क्लियर? नाउ अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट 1 you have these two, design and drawing and review. They individually have 50-50% weightage, right? Now let me just give me an answer. अगर मेरा review of drawing, sorry, let's just take this design and drawing, अगर मेरा complete हो जाता है और इसका जो weightages है वो है 50%, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा प्रोजेक्ट ओवरऑल कितना कंप्लीट हुआ है? 1.75. Sorry, 1.75. 1.75. And how you achieve to that? The 50% of 3.57%. All right, yes, okay, getting it guys? समझ में आ रहा है बाकी सब लोगों को कि this is the beauty of dividing into the weightages. Now contract was having overall weightage percentage of 3.57, but individually if you'll see inside that, design and drawing and review have 50-50% weightages. Now if design and drawing is completed, that means contract 1 is 50% completed, but when I'll ask about the overall project, it will be completed only, right, half of 3.57. Is it clear, guys? Yes, sir. Okay, so each and everything, first of all you need to learn about this concept कि weightages क्या होता है, किस तरीके से। okay, okay, रोहित 3.57 कहाँ से आया? Now right now this is like a value which has been given from my end कि 3.57 हमने माना कॉन्ट्रैक्ट 1 किया वेटेजेस, ठीक है? अभी जब हम कोर्स में पढ़ेंगे तो हमको ये पढ़ना है कि ये वेटेजेस कहाँ से आ रहे हैं। जैसे ये 3.7 आया, इसके पीछे का कैलकुलेशन क्या है, राइट? कैसे ये 3.57 आया कंसिडरिंग ऑल दीज 5 फैक्टर्स, ठीक है? अब इसमें से कुछ चीजें होती हैं जो आपको लानी पड़ेंगी, जैसे कॉस्ट आपको पता होगी, ड्यूरेशन आपको ऑलरेडी पता होगी, कितना मैन डेज लग रहे हैं, मैन आवर्स लग रहे हैं, वो आपको पता होगा। क्रिटिकलिटी और रिस्क हम खुद देते हैं स्केल में कि कितना हमें लग रहा है कि रिस्क कितना इन्वॉल्व है, क्रिटिकलिटी कितनी है इसकी, राइट? और इनके बाद हम इन 5 पैरामीटर्स को क्या करते हैं, खुद में एक वेटेजेस देते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट में मान के चलेंगे कि हम 40% कॉस्ट को वेटेजेस दे रहे हैं, है ना, 20% ड्यूरेशन को वेटेजेस दे रहे हैं, राइट, 10% मैन आवर्स को वेटेजेस दे रहे हैं, और उसके अलावा जो भी बचा हमने डिवाइड कर दिया क्रिटिकलिटी एंड रिस्क में, ठीक है?
तो ओवरऑल हमारे प्रोजेक्ट में ये पांचों पैरामीटर्स कितना वेटेजेस ले रहे हैं, उसके बाद जो हम वैल्यूज असाइन करेंगे उसके बाद निकलेगा ये वेटेजेस, और यही सेम वेटेजेस फिर हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है, राइट, फॉर ईच एंड एवरीथिंग। इज इट क्लियर गाइस? फॉर द एक्टिविटीज लेवल, राइट। कॉन्ट्रैक्ट लेवल की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट लेवल में यू कैन जस्ट गो विद द कॉस्ट, बिकॉज आपके पास डिटेल कॉस्ट होती है कॉन्ट्रैक्ट की, है ना, और बाकी चीजें तो होती नहीं है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट का जो भी वेटेजेस है वो डिसाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन द कॉस्ट, राइट, व्हाट वी हैव सीन ऑन दैट एक्सेल शीट एज वेल। ऑलराइट, तो ये कॉन्सेप्ट हमें पहले सीखना जरूरी है कि वेटेजेस देना कैसे है, और फिर वेटेजेस के आधार पर हम फिजिकल प्रोग्रेस में पहुंचेंगे आगे। ओके, एंड नाउ कमिंग बैक टू द प्राइमावेरा। ओके, ये सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये हमारे इस तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। नाउ इफ आई वांट टू add one simple project on this, what I'll do, I'll simply click here. It's very simple, guys. Okay, if you'll see, it is very simple software, right? You just need to click here on add. You'll get this dialog box, and here you can select the EPS. What is EPS? Anyone? Enterprise project structure or something? Correct. Yes, it is enterprise project structure. And what is enterprise project structure? These, these green and yellow strips which you are able to see here, these are, EPS, right? Now, why EPS being used? Anyone? So in order to get all the projects of one company, like a summary, maybe. Yeah, let me just clear it out. You can say either for the summary, or you can say, let's suppose you have a company, right? आपकी एक company है who is working in different sectors. आप highways में काम भी करते हो, और आप buildings में काम करते हो, या किसी और sector में भी काम करते हो. And then apart from that, you are with many projects. आपके बहुत सारे projects चल रहे हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट आपका इंडिया में चल रहा है, कोई अब्रॉड चल रहा है ना, तो या किसी इंडिया में भी अगर हम बात करें तो साउथ में चल रहा है, नॉर्थ में चल रहा है, एंड लाइक दैट, राइट। सो हाउ यू विल डिफरेंशिएट दिस होल लिस्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, राइट? आप किस तरीके से बाइफरकेट करोगे अपनी इस कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को, राइट? तो व्हाट वी डू सिंपली इन ईपीएस, हम एक हायरार्की बनाते हैं, ठीक है। व्हाट वी डू, वी जस्ट क्रिएट अ हायरार्की लाइक दिस, ठीक है। एक ट्री स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमारे ये ईपीएस रहने वाले हैं, एनर्जी सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंड लाइक दिस, राइट, डिपेंडिंग ऑन कंपनी, जिस भी सेक्टर की कंपनी है उस पर डिपेंड करते हुए इस तरीके से ईपीएस क्रिएट होते हैं। और इन ईपीएस के अंदर फिर हमारे जो भी रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, ओके, उनको हम रखते हैं। क्लियर? नाउ आई वाज एडिंग अ प्रोजेक्ट हियर। जैसे मैंने ऐड प्रोजेक्ट में क्लिक किया, मेरे पास सेलेक्ट करने आता है ईपीएस। Let's suppose I'll select here energy services, right? I'll click on next, and I have project ID and project name. Okay, let me just write it down, demo project. Okay, next. Now I have project planned start date and must finish date. Now, again, a question from you guys. Okay, right. You are getting project planned start date and must finish date. What do you think? I should add here must finish date or not? This features is available in Primavera P6, but do you think we should go with this adding now, or do you think that we should exclude it and we'll work on this later on? Later on. If It depends. Exclude the rough date. now maybe Primavera will conclude that the end date if we are not fixing the finish date first. Okay. Somebody said that depends. Like, why? What do you think? Like, depending on different situation, how you are going to deal with this? Depends on the type of project. Some projects comes with a must finish date, like an accelerated project. They have a production, they need to start, so we must finish before then. Right. So based on that, you have to plan your activities to finish and find a way to finish by adding more resources or stuff to finish before the required finish date. Correct. So Abdul, very correct.
some projects like manufacturing and production, all these things, they need to be finished in a particular duration, sort of duration or sort of time. In that case, when you are very sure about the finish date, right, and you need to finish that particular work or the project in that particular date, you'll definitely give your must finish date, right? Otherwise, if we'll simply talk about the construction projects now, we do have a finish date, but what happened is, now I'm talking based on from the perspective of this particular software. If we'll give must finish date here on, right, what will happen is Primavera will set a constraint, right? Now, when you'll start preparing a schedule here in the software, right, what will happen? You have already set it up must finish date constraint, right? Let me just go back to the, okay. Now, what happened is you have already set a constraint, right? Must finish date. Now, when you will add the activities and you will start giving the duration and relationship, it might happen that few of your activities exceed that must finish date, right? So what Primavera will show there, it will give you a negative lag, right? So to just to don't see or to just don't go with all those situations, what we do is we don't provide the must finish date right now in the beginning, right? What actually can be done is you can just leave giving the must finish date here on, right? And what will happen when you'll start giving the duration and relationship to your activities, it will automatically get some must finish date, because आप क्या कर रहे हो, सारी एक्टिविटीज को लिंक कर रहा है एक दूसरे से और आपने कुछ ड्यूरेशन ऑलरेडी दे रखी है, तो कोई ना कोई एक मस्ट फिनिश डेट ऑलरेडी आ रही होगी सॉफ्टवेयर में, राइट? फिर आपको लगता है कि जो मेरा शेड्यूल है उसको कंप्रेस करने की जरूरत है, देन यू कैन वर्क ऑन दैट, राइट? इससे क्या होगा कि एक ऑलरेडी कंस्ट्रेंट नहीं बनेगा यहाँ पर शेड्यूल प्रिपेयर करते वक्त, और जो नेगेटिव लैग वगैरह देखने की बातें हो रही थी वो सारी चीजें नहीं होंगी. तो इन द बिगनिंग मस्ट फिनिश डेट नहीं प्रोवाइड करना चाहिए व्हेन यू आर डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स. और जब आपको पता है कि प्रोजेक्ट्स में डिले हो सकते हैं, चांसेस हैं, और मेरे को पता है कि मेरा प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट नहीं है एंड ऑल अदर थिंग्स, तो आई वुड से कि दिस इज जस्ट एन रिकमेंडेशन गाइस, I would say you should not go with the must finish date because it works as a hard constraint. Is it clear? Now I will go next, right? And then responsible manager. You can just give here the name of manager. It is coming as energy, okay, and not a deal. Okay, I'll just select it as a corporate as of now, right? Next, assign rate type. Now we'll discuss about all these things, what these different rates works and how they work. Right now I'll go with the standard rate. Okay, and congratulations, finished, your project has been created, right? Now here if you'll see, in a simple steps we have created a project, right? Okay, where's my project? Right, this is demo project. Okay, now जो भी डिटेल्स हमने फिल की, हमारे पास यहाँ पर सारे ऑप्शंस थे अवेलेबल हियर इन द बिलो, राइट, डाउन देयर. तो अभी हमें समझना ये भी जरूरी है कि कौन सी चीजों को कहाँ से किया जा सकता है. वहां से भी कर सकते थे हम, यहाँ से भी कर सकते थे. वी आर हैविंग टू वेज टू डू दिस, राइट? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमने यहाँ पर ईपीएस देखा कि ईपीएस है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है. इसी तरीके से एक ओबीएस भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, राइट? तो जब हम किसी क्लाउड पे काम कर रहे होते हैं, लाइक व्हेन वी आर वर्किंग ऑन अ क्लाउड, जब हम अभी ये जो सॉफ्टवेयर है वो स्टैंड अलोन है, वी आर वर्किंग ऑन द डेस्कटॉप्स, राइट? जब हम ईपीपीएम प्राइमवेरा में काम करते हैं तो हम क्लाउड में काम कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास जो भी हमारे कोलीग्स हैं डिफरेंट लोकेशंस पे बैठे हुए हैं, दे कैन आल्सो वर्क टुगेदर ऑन द सेम शेड्यूल. उस टाइम पर हमारे पास ये ओबीएस और ईपीएस काम में आते हैं, ठीक है. बट अभी स्टैंड अलोन की अगर मैं बात करता हूँ, क्रिएटिंग एन ओबीएस डजंट मेक a very important sense here. इसी तरीके से EPS सिर्फ हमारे पास एक तरीके से क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होती है कि दिस इज समथिंग, दिस प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, दैट्स इट, राइट? So this is in a simple step how we have created the steps, right? उसके बाद अगर हम यहाँ पर सबसे पहला अभी काम क्या करते हैं, यहाँ पर आने के बाद we have to set the calendar, right? Now how to set a calendar? You'll go here on enterprise, right, and you'll search for the calendar. We have three different types of calendar: global calendar, source calendar, project calendars, and all, right? So you need to understand this, and you need to understand how to create a calendar here, how to modify a calendar, existing calendar as well. Apart from that, you have to go here, and here you have to add the WBS, the very first thing, right? Let me just
add very quickly these 3 WBS. Okay, for the demonstration purpose only. Okay, I'll add contract 1, contract 2, this contract 3, right? I've added just these 3, and you can just continue adding these or the sub WBS. Okay, now I'll go back to the activities. If you'll see, the hierarchy is not coming in a similar way what we have added here. For this, you need to just close this, okay, and you need to open this again. Okay, now it looks good, right? This is how you have created a WBS. Okay, and now you'll start adding the activities. Okay, there are a lot of things, activities name. Right now, I'll just give A. Next, what is the WBS? If you want to switch over the WBS, you can do that too. Then type of activities, you need to understand what are the different types, resource dependent, start milestone. See, milestone is something different, right? What is milestone? If I'll say people who have worked on MSP, what is milestone and what is different there? There is no, there is a standard date, means any duration, means only particular date. Okay, yeah. So milestone is what? Milestone is simply a 0 duration activity. It does not have any duration. It's simply a flag that something you have completed, something you have achieved, right? In the same way, जो similar आपका जो start milestone होगा, not a targeted date, but आप ये बोल सकते हो कि हाँ, आपने जैसे बोला कि मैंने फाउंडेशन का सारा एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया, तो आपने एक माइलस्टोन बना दिया कि हाँ यार, इस जैसे ही ये मेरा सारा एक्टिविटीज कंप्लीट होगा, ये मेरा जो फ्लैग है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा माइलस्टोन जो है वो अचीव हो जाएगा, है ना? अभी माइलस्टोन आपको कॉन्ट्रैक्ट्स में भी देखने को मिलते हैं, पेमेंट्स होती है आपकी माइलस्टोन बेसिस पे, तो हम वो सारे माइलस्टोन क्या करते हैं, शेड्यूल में ऐड कर लेते हैं ताकि हमको ये पता चल जाए कि दिस पर्टिकुलर thing we have completed, right? So in a simple way, milestone is what? A 0 duration activity. जहां पर अगर स्टार्ट माइलस्टोन होगा तो आपके पास सिर्फ स्टार्ट डेट होगी, फिनिश माइलस्टोन होगा तो सिर्फ फिनिश डेट होगी, कोई ड्यूरेशन नहीं होती। नाउ जिन लोगों ने एमएसपी में काम किया है, एमएसपी ने 2017 के बाद, नहीं, नॉट श्योर सर, 2017 और 2019, उन्होंने एक नया फीचर ऐड किया, लाइक यू कैन मेक एक्टिविटीज माइलस्टोन even if they have a duration, right? अगर आप वहां पर एडवांस टैब में जाओगे, you'll get that option too. तो जो लोग एमएसपी में वर्क कर रहे हैं, you can go and check in that. Okay, so by default हम task dependent रखेंगे एक्टिविटी को. Now here you can assign resources, but हम resources में बाद में काम करते हैं, right? Next, now duration type. You need to understand what difference will be created if you select fixed duration in unit, fixed duration in user per time, fixed unit and fixed units per time. क्या डिफरेंसेस है इन सब चीजों में, ये चीजें समझना जरूरी है. एक्टिविटी यूनिट्स एंड ड्यूरेशन, राइट? एंड देन डिपेंडेंसी ऑफ एक्टिविटीज. नेक्स्ट, मोर डिटेल्स, नो, फिनिश. एंड दिस वाज अ वेरी सिंपल वे हाउ टू क्रिएट दीज एक्टिविटीज. एक एक्टिविटी हमने इस तरीके से क्रिएट की. अभी मैं जाऊंगा और यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी क्रिएट करता हूँ और मैं सीधे सीधे यहाँ पर फिनिश में क्लिक कर देता हूँ, राइट? मैंने सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से एक एक स्टेप इस तरीके से 1 by 1 कंप्लीट किया. Otherwise, I have, chance to add each and every detail which I have added there. यहाँ से नीचे से मैं हर एक डिटेल क्या कर सकता था, ऐड कर सकता था. अभी आप देखोगे तो यहाँ पर ये होता है गैंट चार्ट, यहाँ पर कुछ भी अपीयर नहीं हो रहा है, नथिंग इज अपीयरिंग हियर. बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास कॉलम्स मिसिंग है. यू नीड टू गो जंप टू द कॉलम, ओके, और यहाँ से ड्यूरेशन में जाएंगे, ओरिजिनल ड्यूरेशन को लेकर के आएंगे और इसको सेट कर देते हैं एक्टिविटी नेम के बाद अप्लाई, ओके, राइट? यहाँ पर आप देखोगे तो ओरिजिनल ड्यूरेशन इज 2. आई डबल क्लिक हियर. अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा बार नजर आ रहा है आपको, ए और बी. लेट अस ट्राई टू इंक्रीज दिस ड्यूरेशन हियर. आई विल गिव इट 5 and I'll give it as 10. Okay, like this. So you can see the bars here, you can see the representation. इस तरीके से ड्यूरेशन के बेसिस पे आपको बार देखने को मिलेंगे. Now simply if I want to
give relationship in these. बहुत सारे तरीके हैं relationship देने के. एक तो तरीका ये है कि आप इसको इस तरीके से scroll कर सकते हो और इस तरीके से जाके ऐड कर सकते हो. मैंने relationship दे दी यहाँ पे finish to start. ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, अगर मुझे अभी भी क्या लग रहा है, अभी इसको शेड्यूल कर देते हैं. अब आप देखोगे तो फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप में आ चुके हैं. बट to the people who are learning or who are working as well, I'll never recommend this way जो मैंने अभी यहाँ पर किया, बार से बार को कनेक्ट किया. ठीक है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, अभी आपके पास 2 एक्टिविटीज, यू आर एबल टू डू दैट, राइट. बट जब आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ एक्टिविटीज होंगी, देन दिस मेथड में create a problem for you, right. So this is recommended that not to use this particular way to give the relationships. We have a lot of other ways to give the relationship also in a shortcut way. अगर बात करते हैं हम, आपके पास किसी शेड्यूल में 2000 एक्टिविटीज हैं, तो आप शॉर्टकट तरीके से किस तरीके से रिलेशनशिप दे सकते हो सारी की सारी को. बिकॉज अगर आप 1 by 1 ऐड करने जाओगे तो थिंक अबाउट द 1000 एक्टिविटी, हाउ यू विल डू दैट, राइट. So these things are something, this is just a small demonstration how the Primavera looks like, how to create a project, add activities, create a WBS, and we discuss about the weightages concept as well. With the help of that, you'll be able to, create your physical progress of your project, right? Then, okay. All right. So this was all from my end today, right? A small demonstration of this. Okay. Now, if you guys have any question related to the topics which we discussed or related to this course curriculum, you can drop your question or you can just discuss here as well. Over to you guys. Hi. Hi, Mohammed. The class, we are going to start the new projects like multi-story building or villa like that, or just only selective parts only. Okay, for the course, okay, so the complete course will be based on building projects. Okay, not this much. This was just because of demonstration purpose. We'll not go like this. Okay, we'll be covering the complete course based on the building projects. Okay, apart from that, I'll give you kind of assignments and all, because see, you can just focus on one particular industry. It may happen कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो किसी अदर इंडस्ट्री से भी बिलोंग करते हैं, बट सीखने के पर्पज से आप एक ही इंडस्ट्री को टच कर सकते हो, राइट. तो हम बिल्डिंग सेक्टर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को टच करेंगे इन कोर्स. Thank you. Okay. All right. Main difference between MSP and Primavera. Okay. So in a nutshell, अगर मैं बोलता हूँ MSP और Primavera में अंतर क्या है, तो MSP और Primavera में difference is something कि MSP हेलीकॉप्टर है, Primavera is aeroplane, right? Am I audible, guys? Right? तो MSP में क्या होता है, MSP में कुछ limitations हैं और Primavera उनको ओवरकम करता है, और कुछ चीजें हैं जो MSP में बेटर है और Primavera में वो चीजें बेटर नहीं है. जैसे मैं पर्टिकुलरली मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बोलता हूँ, तो रिपोर्टिंग के पर्पज से MSP इज क्वाइट गुड, है ना. वहां पर जो आप रिप्रेजेंटेशंस देखते हो, आपको डैशबोर्ड्स बिल्ड मिलते हैं, ठीक है. वो सारी चीजें Primavera में अच्छी नहीं है, वो वहां पर Primavera थोड़ा लैग करता है. बट अगर मैं नंबर you are not audible. I am, guys, like I'm audible, right? Yes or no? Yes, yeah, sure. Yes. Yes. रोहित, आपका कुछ इशू होगा शायद, ठीक है. और बात करूं अगर मैं MSP की, ठीक है, तो MSP में क्या होता है कि आप नंबर ऑफ लिमिटेड एक्टिविटीज हैं जिनको आप हैंडल कर सकते हो. यू कैन नॉट रन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम, ठीक है. ये सारी चीजें से ओवरकम करता है Primavera. ओके, तो ज्यादा नंबर ऑफ एक्टिविटीज आप एक बारी में काम कर सकते हो, ज्यादा नंबर ऑफ यू कैन just assign more baseline into the Primavera compared to the MSP. So these are something, कुछ changes हैं. और ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें अगर हम, तो इंडिया के बाहर Primavera एक बड़े एक्सटेंड पे काम होता है उस पर. इंडिया की बात करें तो ऑब्वियसली अभी भी बहुत सारी जगह MSP यूज होता है, राइट. डेवलपिंग कंट्रीज में MSP ज्यादातर यूज हो रहा है, ठीक है. बट जो मेजर प्रोजेक्ट्स होंगे आपके, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो, वहां पर आप देखोगे कि Primavera इज बीइंग यूज्ड. बट एज अ प्लानिंग इंजीनियर यू शुड नो बोथ द थिंग्स, बिकॉज कई बार कॉन्ट्रैक्टर ही, जो क्लाइंट होता है वही आपको लिख के दे देता है कॉन्ट्रैक्ट में कि दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इज नीडेड, राइट.
So that is the reason. Sir, if I may ask, what added value you'll get from MES if you use Primavera? I know you may answer this in Hindi, but I only understand English, so I apologize. Okay, sorry, could you just repeat your question? What additional values you'll get in MSP or the Primavera? What additional value you'll get from MSP compared to Primavera? So is it enough to learn only one, or you have to know both of them? No, I would say, see, is it enough to know one? Because if you'll know one, you'll be able to schedule the project, right? You'll be able to know the concepts of planning, right? But if I'll say, from the upskilling purpose, right? You are an engineer, right? If you'll know both the tools, it will be comfortable for you to go into into both types of companies. If the company is using Primavera, you'll be able to go and work there as well. Otherwise, what will happen, it will become a constraint for you as a planning engineer. You are good with MSP, but you are not, you haven't worked on Primavera. And sometime let's suppose requirement came for Primavera. At that time, if you'll be, good with it, definitely it'll be a plus point. Otherwise, things are quite similar. Both most of the terminologies related to planning, related to scheduling are quite similar in both the software, right? And things what you perform there are also similar, right? So is it good with, learning one and to go forward with that? But yes, meanwhile, in your career, you will definitely need to learn other tools as well. But what I mean is it like you're going to teach the same thing in both of them? How to create a project, how to schedule a project? Like you're this is related to Primavera. I'll be teaching you the Primavera. In this, not only the Primavera is included, it is inclusive of all the things, how to report and how to use the data in Excel, how to create these kind of interactive dashboards, right? And S-curve and other stuff as well. There's a different instructor who will be teaching you the MSP. I don't know, like only the software part has been included in that course, or something additional has been included in that. You can attend the demo class for that. Okay, you'll get to know. So we both are like different instructors for both the software. Sir, which course you prefer for beginner? Which course? Primavera. Primavera. See, this is nothing like कि ये beginner के लिए है, ये stages हैं. मतलब आप कोई ऐसा नहीं है कि ये beginner के लिए है या advanced के लिए है, right? It will give you the overall, picture. Starting से जिसको कुछ भी नहीं आता है, right? उसके लिए भी है, और जिसको कुछ आता है, like he is good in, understanding the things. जिन्होंने साइट पे काम कर चुके हैं वो लोग, और अब वो अपने करियर को एक दूसरे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं. So for that, they need to learn into the Primavera or MSP. तो उस तरीके से चीजों को डिजाइन किया गया है. कुछ ऐसा नहीं है कि ये बेसिक है और ये एडवांस है. It includes everything from basic to the advanced. सर एट स्टार्टिंग हमने देखा कि वेटेज देना है, तो सर कॉस्ट, ड्यूरेशन, एफर्ट्स, क्रिटिकलिटी, उसको वेटेज कैसे देंगे? मतलब कि कॉस्ट को 40% ही देना है, 40 to 50 देना है, वो कैसे डिसाइड करें? ओके, मतलब आप ये बोल रहे हो कि उस चीज को इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है, कि 40% देना है, 60% देना है, ये कैसे? यस सर, यस. देखो, इम्प्लीमेंट करने वाली जो बात है वो हम कोर्स में सीखेंगे, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसका पीछे का कैलकुलेशन क्या है. बट आपके क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ कि आपने बोला कि कैसे डिसाइड होगा 40% देना है, 60% देना है. तो हम ये चीज ना नेगोशिएट करते हैं क्लाइंट के साथ भी. जब हम अगर ये पांचों पैरामीटर्स को ले रहे हैं, राइट, लाइक वी हैव इम्प्लीमेंटेड इनटू वन ऑफ द मेट्रो प्रोजेक्ट, तो वहां पर हम क्लाइंट के पास नेगोशिएट करते हैं, बैठते हैं, इसको कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि लाइक लेट सपोज आप बोलते हो कि मैंने 60% वेटेजेस कॉस्ट को दिया है, तो जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो 60% कॉस्ट के उस पर डिपेंड करेंगी. अदर फैक्टर्स जो थे उनमें भी कुछ कुछ वेटेजेस होगा, राइट. तो ये कोई फिक्स चीज नहीं है. अगर क्लाइंट उससे सेटिस्फाइड है, देन यू विल गो विद दैट पर्टिकुलर रेशियो. ओके. ऑयल एंड गैस विल नॉट बी कवर बिकॉज ओके, सारी चीजें कवर नहीं हो सकती हैं. एंड आई एम ऑल्सो नॉट फ्रॉम ऑयल एंड गैस, राइट, डोमेन. बट यस, इन दिस यू विल गेट एन ओवरऑल फ्लो कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर काम करता है, किस तरीके से मॉनिटरिंग काम करती है, किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है.
उसके बाद आप लोग अपनी अपनी डिफरेंट फील्ड्स में उस चीज को अप्लाई कर सकते हो, राइट? Sir, after doing this course, which post we can apply for? Are you a fresher? Yes, sir. 2021 pass out. Okay, see, I would say that for a fresher, अगर आप बोलोगे तो it's really hard to directly go and jump into the planning department or management roles. बट हाँ, अभी आप देखोगे कि अगर हम रियलिटी की बात करते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि आपको पोजीशन नहीं मिलती है. पीपल आर देयर हु लाइक कॉलेजेस हैं जो एमबीए कराते हैं, राइट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह में, निकमार, राइट, एमएटी का, आरआईसीएस और ये सब, दे गो एंड वर्क देयर, राइट? बट for you it's quite hard to directly go into the planning as a planning engineer, right? What I'm trying to say is you can definitely apply, but हाँ, आपको छोटी कंपनीज में directly you will get a chance to work into the planning department. ठीक है, वो आप चाहे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के तौर पे काम करो या कैसे भी काम करो, ठीक है? तो आप स्पेसिफिकली प्लानिंग इन डिपार्टमेंट में अपने आप को अप्लाई कर सकते हो, वहां पर किसी रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो, यू कैन सीक अ पोजीशन देयर, राइट? बट अगर आप डायरेक्टली बोलोगे कि आपको कोई प्रोजेक्ट मैनेजर बना देगा या प्लानिंग इंजीनियर बना देगा, दैट इज क्वाइट डिफरेंट, राइट? दैट इज अ डिफरेंट थिंग. आपको वहां पर एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी. Sir, will you provide any the course book? Course book not, but definitely all the PPTs, because each and everything, nothing is like there कोई book नहीं है यार. यहाँ पर PPTs हैं जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, राइट, डे बाय डे. तो वो सारी PPTs और रिकॉर्डेड लेक्चर्स और जो भी मटेरियल्स है वो सारा चीजें आपको प्रोवाइड किया जाएगा. जैसे ये सारी जो एक्सेल शीट आपको दिख रही थी, राइट, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी. Not like the books means the. Sorry, There is no subject book like P6. सब्जेक्ट बुक कुछ नहीं है यार. जो भी कंटेंट है ना वो मतलब अभी आप बोलोगे कि देयर आर 20-25 स्लाइड, ठीक है, जिसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है. अब उस स्लाइड को आप पेजेस में लिख दो एमएस वर्ड में या स्लाइड में लिख दो, बात बराबर हो गई. उसके अलावा कंटेंट है जो भी एक्सेल और फॉर्मेट अलग अलग यूज हो रहा है. Okay, thank you. So how many assignments do you given in this course? सॉरी, असाइनमेंट. How many assignments we done in this course? Okay, so we'll just go with 2 or 3 assignments in overall 21 or 30 days duration. Yes, जिसमें आप प्रोजेक्ट शेड्यूल कर रहे होगे डिफरेंट लेवल्स पे. पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा एक बेसलाइन शेड्यूल किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है? पहले से ही हम रिसोर्सेज वगैरह ऐड नहीं कर लेंगे. विल फर्स्ट लर्न कि किस तरीके से एक सिंपल सा शेड्यूल क्रिएट करना है, बेसलाइन शेड्यूल किस तरीके से उसे अपडेट करना है. Then we'll move towards the resources, adding resources and all of that. So every part में हम different schedules को add करते जाएंगे. तो इस तरीके से मिला करके आप 2 से 3 शेड्यूल प्रिपेयर करोगे at the end. And sir, any rate analysis is covered in this course? Rate analysis is not the part of this. That is related to quantity estimation. जब हम quantity estimation पढ़ते हैं, इसके पहले ही बैच खत्म हुआ है, उसमें वो सारी चीजें इंक्लूडेड है. Rate analysis. Okay, so then how can we decide labor man productivity and machinery? राइट, तो रेट एनालिसिस इज नॉट इंक्लूडेड यार, बट यस कि एक आपको एक्टिविटीज में कितना लेबर लगना है वो चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड है. हाउ टू डिफाइन दैट, किस तरीके से आपको पता चलेगा कितना लेबर लग रहा है, राइट? तो दैट इज इंक्लूडेड है, जो चीज यूज में आनी है. ये आप कोई बोल रहा है शायद, है ना, उसका आवाज गूंज रहा है. हाँ, आपने क्या बोला यार, प्लीज वापस से रिपीट करोगे? सर, जो आप एक्सेल शीट देंगे ना वो एडिटेबल होगा, नॉन एडिटेबल होगा सर? वो चीजें आपको एलएमएस में पीपीटीज अवेलेबल होती हैं, ठीक है? जो पीपीटीज हैं वो वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं, राइट? दैट विल नॉट बी एडिटेबल आई गेस. बट जो भी एक्सेल शीट्स वगैरह हैं वो आपको डायरेक्टली शेयर होती हैं और वो चीजें आप यूज कर पाओ इस पर्पज से आपको दिया जाता है डायरेक्टली. दैट विल बी एडिटेबल. सर ये एमएमएल क्या बोल रहे हो आप सर, क्या चीज है ये? मतलब प्रोटेनी का एक खुद का वेबसाइट है जहां पर आपको डेली का कंटेंट मतलब वहां पर आपको मिलेगा. जैसे मान लीजिए आज की क्लास आपने कवर की, इसका रिकॉर्डिंग और इसका पीपीटी जो भी मटेरियल था, जो भी पढ़ने में आपने यूज किया, वो सारी चीजें वहां पे मिलेगी. जो एक्सेल शीट वगैरह है जिसपे आपको काम करना है वो सारी चीजें आपको ग्रुप में मिलेंगी.
Okay, sir. All right, guys. Any other question, or we can just Sir, find out? Yeah. सर ये कोर्स करने से पहले बेसिक मतलब क्या चीजें पता होनी चाहिए? देखो, बेसिक चीज अगर मैं बात बोलता हूँ आपको, तो बेसिक चीज है आपको किसी भी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट का, मान लो मैं बात करता हूँ कि बिल्डिंग का, तो एक ओवरव्यू होना चाहिए यार कि बिल्डिंग में कौन कौन से चीजें होती हैं, कैसे आप नीचे से लेकर के साइड क्लीनिंग से लेकर के फिनिशिंग तक की एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि किस तरीके से सीक्वेंस चलता है ना? कि हम फाउंडेशन का एक्सकर्शन करते हैं, पीसीसी करते हैं, वहां पे सैंड फिलिंग करते हैं, फिर देन वी मूव टुवर्ड्स द reinforcement, shuttering, concreting like this. तो एक ओवरव्यू आपको अगर उसका है तो अच्छी बात है, आप रिलेट कर पाओगे चीजों को ज्यादा आसानी से। सर अगर ये ओवरव्यू नहीं है तो कहाँ से लेना ये ओवरव्यू फिर? देखो, कुछ चीजें हम ऑलरेडी कवर करेंगे। आई गेस लाइक यू आर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, यस और नो? Yes, sir. I have just passed in 2021. Yeah, so like you are aware like what is column, what is foundation, and foundation comes first, and then substructure and superstructure comes, like इतना information है, right? ये Yes, चीज sir. तो समझ में आता है ना? तो थोड़ा तो समझ में आता है कि यार स्लैब ऊपर बनेगा, कॉलम नीचे बनेगा, राइट? हाँ sir. तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि मैं बात कर रहा हूँ आपको कि थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, है ना? और बाकी जो भी स्टेजेस मैंने आपको बताए कि नीचे से लेकर के क्या चीज ऊपर तक जाती है, वो हम कवर करेंगे, राइट? कि आपको एक फ्लो पता चले। इफ यू आर अ फ्रेशर देन डेफिनेटली विल कवर दैट थिंग, कि आपको एक फ्लो पता चले कि किस तरीके से पूरी की पूरी एक बिल्डिंग डिजाइन करने में कौन कौन सा स्टेप्स होते हैं। Okay, sir. Okay. All right, guys. Any other question? Yes, sir. What time is the class? Because I'm in the Middle East and there's a time difference, and I'm afraid that it will collapse with my working time. So, is it your working time? My working time finish, I think 6:30 your time. Okay, 6:30. So classes will be in same time. What this in this particular time only, 9 to 10 IST. 9 to 10 Yeah. ISD. Yeah, Indian Standard Time, 9 to 10. Yeah. Like in 9 to this 10. seminar, in the same class, in the same timing when you started your class, and now we are able to finish this like in 10:15 around something. So 10:15 or 10:30 will be the finishing time. Yes, definitely in weekends we'll have long classes. So yeah. And is it daily or like once a week, twice a week? In weekdays, it is not daily, 3 to 4 days, and other classes on in weekends. Okay, thank you very much. Right. Excuse me, sir. So can you repeat what does that class days means? Classes days. Okay. देखो, weekends में classes होंगी, Saturday and Sunday, and they will be 1.5 hour classes, and weekdays में this will be a 1 hour class. So 5 days are there in weekdays. So in 3 to 4 days weekdays में classes होंगी. So instead of having Sunday as an off, we'll have a weekdays as off. Simple as that. It means Saturday, Sunday there is no class, or the less Saturday, Sunday less there hours. will be a Saturday, Sunday will be a class, right? तो अगर आप संडे ऑफ मानते हो तो आप 6 दिन अगर पढ़ोगे तो 6 घंटे पढ़ोगे। तो दैट थिंग विल बी कोप अप विद द एक्स्ट्रा क्लासेस जो भी सैटरडे संडे की होंगी। इंस्टेड ऑफ 1 hour विल हैव 1.5 hour क्लासेस, और जो भी ऑफ वाला होगा वो हमारा वीकडेज में किसी दिन होगा। Sir, another question, if you mind. Yeah, sure. A Sunday is a working day here, so is it going to be late or early in the morning? I'm also want to let you know that classes, every classes, either it is weekdays or it is weekend, classes timing will be same. It will be 9:15 to onwards, 9:15 IST in the evening, right? And so just आपका timing, like here in India, if it is 6, and what is the time there? 4:30. 4:30, right? Let's suppose 4:30, right? So 1.5 hour difference is there. Yes. Okay. 7:30. Yeah. Yeah. So it will be 7, like 7:30 something. Sounds so good. No worries. That is good, right? Yeah. It's good. It's good. It's perfect. I'm gonna register for the class anyway, but I have a question. Maybe it's not related to
this part of the course yet. When you do a scheduling in Primavera, some people like management, they ask for like a narrative report. Correct. Yes, yes. Are you gonna go through this as well? Definitely. See, you need to understand, like, never happens like management is not interested in knowing what you are going to do in detail, right? How you manage it at site. That is not their concern. Their concern is only what was your goal and how much you have how much you have, finished up, right? So for like, if something you are showing to, management, they are interested in seeing on the WBS level. Okay, they are not going to see the detailed project summary, each and everything in detail. So for management, you just need to focus on the WBS side. So you must should know how to how to just manage that WBS, right? How you are going to, what are the things, what are the components you need to put on the WBS side, so that when you are representing that to the management, they should be clear for each and everything, right? And for the reporting purpose, definitely you can fetch out the reports as you want, right, on the WBS label side, or on whatever the particular detail. Thank you. No, got it. No worries. Okay. Sir, Sagar Chandra has typed one question in chat, a big question. Okay. Hello, sir. I'm curious. Sagar Chandra. Yeah, got it. Having lesser experience, stuff and rough section. Right time research and planning section is for me, sir. I will, because company will consider me as a fresher, so I can get a job in the field by doing that. Okay, so Sagar, are you there? Sagar, are you there in the call? Hello, yes sir. हाँ. Okay, तो अभी आपको QA किसी में कितना एक्सपीरियंस है? Sir, 1.5 year. Okay, so almost you are a fresher. आप कहीं पर भी जाओगे तो you'll be considered as a fresher, हाँ right? sir. So the thing is, like, if you are interested in going into the planning, right, definitely you can learn this, because यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी. Like guys, see, there is one thing I would say to everybody, right? Whenever you are taking any class from anywhere, right? These 20 hours class, 30 hours class, 6-month course, 5 month course, 3 months course, right? Never ever expect things कि आपको you'll get the experience what you will get actually working at site. जो आपको actual में experience मिलेगा site पे work करके, वो किसी भी class से नहीं मिल सकता है. Getting it? But yes, you'll get all those knowledges which is actually required to go to that particular position. जो आपको उस position में पहुंचने के लिए चाहिए है ना, वो चीजें आपको इन courses से मिलेगी. So जब भी आप बैठते हो किसी भी क्लास में, तो इस माइंडसेट से पहुंचो, इस माइंडसेट से बैठो कि मुझे चीजें समझ आ रही हैं, मुझे वो चीज समझ में आ रही है, और ऐसा ही कुछ इन्वायरमेंट होगा जब वहां पर मैं जाकर के काम करूंगा. कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट जरूर मिलेगा जब आप रियल में उस साइट पे या कहीं पे भी सिचुएशन को हैंडल कर रहे होगे, राइट? नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा. डेफिनेटली यू लर्न हाउ टू वर्क ऑन दिस सॉफ्टवेयर एंड हाउ टू मेक दीज काइंड ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स एंड अदर थिंग्स जो प्लानिंग इंजीनियर एक बनाता है. ठीक है, फिर जब आप इम्प्लीमेंट करोगे इन चीजों को वहां जाकर के, डेफिनेटली विल सी सम चेंजेस. नाउ कमिंग टू द करियर स्विच पार्ट, आप इन चीजों को सीख करके, ठीक है, आप अपनी कंपनी में या किसी दूसरी कंपनी में मूव ऑन कर सकते हो. आपके पास एक स्किल हो जाएगी कि हाँ यार मुझे ये चीज आती है. यू कैन शो देम. नाउ मैं यहाँ पर कुछ चीजें मतलब अदर तरीके से बोल सकता हूँ. आप QA किसी में भले ही काम कर रहे हो, बट यू कैन शो एक्सपीरियंस, लाइक आपको ये चीज आती है, राइट? यू कैन इंक्लूड दिस इन योर एक्सपीरियंस. आई हैव वर्कड ऑन दीज थिंग्स, आई हैव क्रिएटेड शेड्यूल, दिस इज योर एक्सपीरियंस, राइट? तो आप इस चीज को सीख करके अदर कंपनीज में फोकस कर सकते हो एंड यू कैन गेट अ जॉब देयर, राइट? समझ में आ रहा है सागर? हाँ सर. आई होप कि लाइक मैं आपका क्वेश्चन क्लियर कर पा रहा हूँ. हाँ अगर सर. कुछ और भी है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच. आपने थोड़ा डिस्कस मैं आपसे किया तो थोड़ा क्लियर हुआ सर. ऑलराइट, थैंक यू. थैंक यू सो मच. ऑलराइट गाइस, so can we just wind up the session? Yes sir. Okay. Thank you. Thank you. Thank you very much.